Hi everyone and welcome back to FinLadder. In this video, I have a very special guest and a friend of mine, Kushal Lodha. And अब मैं उनका कोई introduction नहीं दूंगा. I won't say anything about him. I'll just hand it over to him and let him speak a few words about himself. And then we'll have some very interesting questions. The questions on courses, about time management, about life in general. Because we know that whoever is watching this video is a little concerned about the career कि क्या करे, कैसे करे, कौन सा course करे, कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, and all these things. So we'll take all the questions with Kushal right after his introduction. So Kushal, please take forward. Yeah. So firstly, thanks a lot, Ishan, for having me. It's a great opportunity for me to be here and guide everyone who's watching the video. So Mm-hmm. quickly, I'll just introduce myself. Hi guys, I'm Kushal Lodha. I'm a recently qualified chartered accountant in November 2019 with an All India rank 5, and fortunately got a rank in my CA foundations as well as the intermediate as well. Apart from CA, I'm doing CFA as well. I've just given my CFA level 3 in November 2021. The result is due on Feb 3, 2022. So I'm just waiting for my results. And I have cleared my ACCA, which is Association of Chartered Certified Accountants, which is nothing but CA of UK. And there also I've got a world rank 3 in one of the papers. I'm working in Aditya Birla Ventures right now, which is a newly set up VC arm of Aditya Birla Group. So we invest in early stage startups right from pre-seed to Series B rounds of funding, and we focus on fintech and edtech kind of sectors. So that is my work profile as of now, and I would be happy to chat with all of you. So that's very good. And you mentioned about a few courses. You mentioned ACCA, you mentioned CFA, you mentioned CA. So the main question is, there are so many courses. Like apart from these three, also there's FRM, CM, and so many courses. So my question right now is, whoever is watching this video, how can that person, how can that student decide कि यार कौन सा long term course is for me? Because I believe कि यार long term course choose करना wisely is very important. It takes some cost, and more importantly, it takes your time. कि इस चीज में अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा यू कुड हैव डन समथिंग एल्स. सो हाउ डू यू डिसाइड with the right approach कि which long term course should I take? Correct. That's a wonderful question. I think the best way to decide any course like for a student is like कि उसका interest कहाँ पे है. तो अगर उसका interest बहुत finance specific है, so you can go for CFA, FRM, CMT, these kind of courses. अगर कोई बंदा है उसको accounting या taxation में काफी interest है, he can go for courses like CPA, ACCA या CA. अगर कोई बंदा है उसको costing का काफी interest है, like he knows, like he loves to calculate costs and he just wants to be in a role where like cost accountant kind of role रहेगा, तो उसके लिए cost Right. and management accountant वो वैसे kind of roles बहुत सही रहेंगे. So I think like it's a very person specific first of all, and secondly अगर कोई भी इंसान का interest वो field में automatically generate हो जाता है, तो it's very easier for him to crack that particular course. So it's like पहले तो ये decide करना है interest कौन से field में है, और ये कैसे decide करोगे, like by working somewhere in those particular fields, और at least आपको inherently कौन से, अगर आप कोई topic पढ़ते हो तो उसमें ऐसे automatically मजा आता है या इच्छा होती है कि इसमें और पढूं या इसमें और deep dive करूं. तो वो टॉपिक्स पहले फाइनलाइज करो, आपके इंटरेस्ट डिसाइड करो. एक बार आपने आपके इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया, आई थिंक उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजियर टू डिसाइड ऑन विच कोर्स टू गो फॉर. सो देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स ऑल्सो. अभी जैसे सीए कोर्स है तो उसमें 5 साल देनी ही पड़ेगी, तो यू हैव टू हाँ. बी श्योर कि 5 years डेडिकेटेड आपको सीए में ही देने पड़ेंगे, आप दूसरी कोई चीज कर नहीं सकते हो. इफ यू आर डूइंग लेट्स से सीएफए, तो सीएफए में इतना डेडिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. इट्स लाइक कि एग्जाम के 1-2 महीने भी पहले भी चालू कर दिया तो यू कैन क्लियर ऑल द 3 levels इन वन गो. तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास, आपका कॉस्ट लाइक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, बिकॉज इफ देयर इज अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट then CFA is an expensive course. So True. CFA में like the total cost for all the 3 levels would go somewhere around 2.5 to 3 lakhs. Exactly. And it's like कि उसमें scholarships भी available होती है, but barring that, assuming कि scholarship नहीं मिलती, तो it's an expensive course as compared to other courses. So next would be the financial constraints and time available. And lastly I think कि उनका end objective क्या है. तो for example अगर मेरा end objective है कि मुझे मेरी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करनी है, तो देन आई गो फॉर सी एंड देन आई फेच सम इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल एज इंडियन क्लाइंट्स. अगर किसी का एंड गोल है कि गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मे बी हेज फंड और वर्क इन एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन द यूएस और मे बी इन इंडिया, तो इट्स लाइक कि वो सीएफए करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वैल्यूड कोर्स इन एनी हेज फंड और इन एनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. तो एंड गोल भी डिसाइड मतलब मैटर करता है. तो डिपेंडिंग ऑन माय एंड गोल आई विल डिसाइड ऑन दीज कोर्सेज. सो ऑल इन ऑल देयर आर 3 factors. सबसे पहला इनहेरेंट इंटरेस्ट, then secondly time and financial constraints, and third is like what is your end goal. So these 3 factors would summarize like कौन सा course select करना चाहिए. Perfect. I think it covers almost every single point. And guys, in short, so first of all, make sure what your interest is. And as he said, to find out your interest, work somewhere. And I understand that getting to work somewhere, be it an internship, be it a job, it's very difficult. So for that, what you can do is you can go for short-term courses. As Kushal rightly mentioned, कि उसको उस चीज़ को पढ़ते हुए मजा आएगा आपको. It's not like आपको कोई force कर रहा है, कुछ और कर रहा है. So it will be very beneficial if you find your interest and then do the right course. Now let's say somebody did that.
अब मेरे को समझ में आ गया कि यार मेरा इंटरेस्ट है सीए के अंदर, आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट यू नो देर आर मेनी पीपल हु आस्क दिस कि यार मैंने सीए के 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, बीट इंटरमीडिएट बीट फाइनल, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर डीमोटिवेशन हो रही है, या फिर मेरा मन है सीए करने का लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। सो व्हाट इज द राइट टाइम, और शुड एनी वन एट एनी पॉइंट कॉल इट एन ऑफ कि यार चलो ठीक है यार, सीए में मैंने 2-3 अटेम्प्ट लगाए, 3-4 साल हो गए फाइनल देते हुए, नहीं हो रहा, आई शुड मूव ऑन। सो व्हाट इज दैट टाइम, लाइक व्हाट इज द राइट टाइम फॉर दैट? आई थिंक दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेरे को ऐसा लगता है कि सी अगेन दिस इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि अल्टीमेटली उसको अचीव क्या करना है लाइफ में। तो अगर एक कोई बंदा है कि उसको ठीक है, उसने डिटरमाइन कर ही लिया कि कितने भी अटेम्प्ट लग जाए, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट सीए एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट लाइक हम्म। irrespective ऑफ द फैक्ट कि कितने भी अटेम्प्ट लग जाए, देन ही इज गोइंग टू क्लियर इट नो मैटर इट्स लाइक 8 attempts, 10 attempts, 15 attempts. I know many of my friends who have cleared their CA in the 10th or 11th attempt and still they are ओके। doing very well in their lives. So by very well, I mean like they are well settled, they are financially independent, have a good family, and are well settled. So like I know a lot of people who have like taken multiple attempts. In fact, मैं जहाँ पे article ship कर रहा था, the person whom I was reporting to for the initial 6 months, she like cleared her CA at the age of 35, and she took 14 attempts to clear her CA. So ओके। that was her story, which is very inspiring. तो आई थिंक ऐसे तो मतलब वो पर्सन स्पेसिफिक है। सो माई एडवाइस टू एवरीवन कि कहाँ पे वो क्विटिंग फैक्टर आना चाहिए, या फिर कहाँ पे ऐसा ये आएगा कि आपको डिलेमा आएगा कि सोचना पड़ेगा बिटवीन क्विटिंग सी एंड देन डूइंग सम अदर थिंग। सो फर्स्टली अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है, या फिर यू हैव सम वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बैकअप एज इन गुड इनकम सोर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल a lot of my friends, they are good content creators and they are earning very good amount of money through content creation as well. अगर वैसा कुछ अच्छा strong backup है wherein like you can leverage your creativity, and if CA is hampering that, then it's okay, like you have a good backup, you can start up with something with that content creation itself will be easier for you to market. तो वो टाइम पे आप कर सकते हो। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप ही नहीं है एंड यू डोंट नो अभी वे आउट क्या है, करना क्या है, देन आई डोंट रेकमेंड टू क्विट सीए। सो इट्स लाइक कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि यार इतनी पढ़ाई हो जाती है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आ बट जाता है। अल्टीमेटली इट्स लाइक कि फॉर्चुनेटली आई डेंट टेक अटेम्प्ट, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। बट मेरे फ्रेंड्स भी जो 3-3 4-4 अटेम्प्ट तक पढ़ते रहते हैं, उनको देख के मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम सो लकी कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ प्रेशर यार। ऐसे फेल होने के बाद भी सोसाइटल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, उसके बाद फैमिली को खुश रखना प्रेशर, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस सारे बढ़ जाती हैं। प्रेशर्स होते हैं। एग्जैक्टली और ये सब आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इट्स लाइक लोग इतने इसमें पागल हो जाते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन, ये मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रहा है तो मेरे को फुलफिल करना ही है। सो वन मैसेज इज कि नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, ये रियलाइज करना है। ये तो इट्स सच लाइक है। कि आपके जो वैल्यूड है, जो पेरेंट्स है या जो वैल्यूड वंस है, उनके हम्म। लिए आप जियो लाइक, बट नॉट फॉर एवरीवन एल्स। यू आर लिविंग फॉर योर ओन सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स। दैट शुड बी द फैक्टर लाइक यू शुड कीप इन माइंड। सो टू थिंग्स, लाइक फर्स्ट इज कि अगर आपको बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही या इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है आपको सीए की पढ़ाई में, देन इट्स ओके टू क्विट, बट देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग बैकअप। एंड सेकेंडली, इफ यू थिंक कि CA is a hindrance in order to grow your career in terms of like you aren't able to think new skills or maybe you aren't able to think of new idea, then you should definitely, if you think like you can do well by quitting CA, by getting into entrepreneurship, talking to a lot of founders, applying in some batch of Y Combinator or Antler India, then you can go for that. Because I know a lot of friends who have quit their CA and are still doing very well in their lives. Like मेरा एक friend है, उसने CA quit किया, आज वो मतलब एसबीआई के जो मेन सीईओ वगैरह है ना, उसके स्टूडेंट्स है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। तो वो Okay. ट्रेडर है एंड वो 24 ईयर्स का ही है अभी, तो 23 का ही शायद वो। तो 23 ईयर्स में उसने 21 में सीए क्विट कर दिया, उससे नहीं हो रहा था, बट ही इज डूइंग वेरी वेल इन ट्रेडिंग एंड ही इज लाइक ट्रेनिंग एसबीआई, एचडीएफसी ऐसे कंपनीज के वो म्यूचुअल फंड के सीईओज एंड चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर्स। Wow, तो अगेन अल्टीमेटली मेरे को तो यही लगता है कि इट डिपेंड्स कि बैकअप क्या है आपका, स्किल सेट कितना है आपका, एंड थर्डली आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। that's truly very, very well summarized. There is one more thing that Kushal didn't tell you. If you go on his Insta bio, he has mentioned guitarist, he has mentioned a lot of courses, he has done a lot of content creation on LinkedIn, YouTube, Instagram, everywhere. So my question is, how do you manage your time? Because होता क्या है, everybody when they go to bed, majority of the people think यार आज का दिन भी वेस्ट हो गया, आज का दिन भी वेस्ट हो गया, आप कल से कुछ करेंगे, कल से कुछ करेंगे, और वो साइकिल चलता ही रहता है. So how can one manage their time judiciously and be productive? राइट। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू मैनेज योर टाइम ना, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, आई बिलीव इन टाइम प्रायोरिटाइजेशन। तो मेरे Okay. हिसाब से क्या है कि टाइम प्रायोरिटाइजेशन अल्टीमेटली लीड्स टू टाइम मैनेजमेंट। तो इट्स लाइक अगर मेरे पास 4 टास्क है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक पीस ऑफ पेपर पे या मेरे टू डू लिस्ट पे वो चारों टास्क वन बाय वन लिख लूंगा, एंड आई गिव माई 100% टू अचीव द फर्स्ट टास्क, एंड आई वोंट allocate myself equally into those 4 tasks. Because if Okay. I allocate myself into those 4 tasks, I'll give 25% each,
एंड इनएफिशिएंसी हो जाएगी, कोई भी एक टास्क में मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पाऊंगा. सो व्हाट आई डू इज कि मैं अगर चार टू डूज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, कि मेरा सीएफए का एग्जाम 24 नवंबर को था. तो 22 नवंबर को मेरा प्रायोरिटी फर्स्ट था कि टू क्लियर सीएफए एग्जाम. सेकंड प्रायोरिटी वाज कि टू गो बैक टू माय वर्क इन आदित्य बिरला ग्रुप एंड वर्क जो भी करना है. एंड थर्ड प्रायोरिटी वाज कंटेंट क्रिएशन. तो पहला प्रायोरिटी क्या था, मेरा सीएफए का एग्जाम. तो मैंने बाकी दो पूरा बंद कर दिया था लास्ट के 10 दिन में, बिकॉज आई वॉज ऑन लीव. एंड मैं उस पर ही फोकस किया था. जैसे ही सीएफए का एग्जाम खत्म हो गया 24 नवंबर को, वो अभी हो गया, मतलब आई कैन कट दैट फ्रॉम माई टू डू लिस्ट बिकॉज एग्जाम खत्म हो गया. नेक्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि आदित्य बिरला ग्रुप में अच्छा सा काम करना है, एंड उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है. तो वेन एवर आई एम वर्किंग इन आदित्य बिरला ग्रुप, जहाँ पे भी मतलब मैं काम कर रहा हूँ, सो 100% आई फोकस देयर ऑफिस में. एंड घर पे आने के बाद अगेन अगर टाइम बचता है तो वीकडेज पे यूजुअली आई डोंट क्रिएट कंटेंट. जो भी कंटेंट क्रिएशन होता है पूरा वीकेंड पे होता है. तो वीकडेज पे इट्स लाइक कि ऑफिस से आने के बाद भी थोड़ा काम रहता है, एंड देन उसके बाद लाइक जस्ट रिलैक्सिंग, गोइंग फॉर अ वॉक, या फिर ऐसे ही दोस्तों से बात करो, रूममेट के साथ चिल करो, वही होता है. एंड देन वीकेंड्स पे इट गोज एंटायरली इनटू कंटेंट क्रिएशन. सो अभी ऐसा ही होता है कि सॉरी, तो अभी ऐसे ही होता है कि कंटेंट क्रिएशन टेक्स लाइक मच ऑफ माय टाइम ऑन वीकेंड्स. लाइक एवरी सैटरडे एंड संडे वुड गो इनटू कंटेंट क्रिएशन एंटायरली, एंड मंडे टू फ्राइडे वुड गो इनटू जॉब. तो मेरा तो ऐसा मानना है, टाइम प्रायोरिटाइज करो, एक एक प्रायोरिटी सेट करो, और वन बाय वन उसको अचीव करो, ना कि सब एक साथ अचीव करना है तुमको. So this will be very useful tool in terms of managing time. So this has really worked out very well for me. All right, guys. So I think you would have come across a new phrase, a new term today: time prioritization. More than time management, it's important कि आप realize करो कि आपकी life में इस time सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है. Focus more on that, and then you can focus on other things, because उसके लिए तो time ही time है बाद में. So now one Absolutely. important question is कि अब suppose anybody who's watching this video has decided for a specific course, CA हो, CFA हो, कोई भी long term course हो. So what would be your suggestion, or what would be your tips to that particular person before they start with their long term course? Right. I think one tip which I'd like to give to everyone before starting this any course is that always remember कि theoretical like knowledge जितना भी होगा ना, ultimately practical knowledge is going to matter. तो That's अभी very, आप very true. कोई भी कोर्स ले लो, सीए ले लो, सीएफए ले लो, जो भी आप थियरी में सीखोगे ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्न इन दैट सीए और सीएफए कोर्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. So for instance, if you are doing CA, तो CA में आर्टिकलशिप होता है 3 साल का, where we get the practical experience of talking to clients, filing their returns, or maybe going to income tax commissioner's office, or going to some income tax appellate tribunal to see how judges respond to the arguments of CAs and the appellant. तो ये सब सीखने को मिलता है, तो ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वॉट एवर आई सजेस्ट इज कि आप सीए या सीएफए या कोई भी कोर्स कर लो थियोरेटिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, डू इंटर्नशिप्स या फिर किसी के अंडर काम करो, बिकॉज इट्स लाइक कि योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड थियोरेटिकल वर्ल्ड आर कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब आप मेरे को तो लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जो सीए में पढ़ाई किया है, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, वो मैं आज जो काम करता हूँ, दैट इज नथिंग लाइक वॉट एवर आई लर्न. वो कुछ काम मतलब वो कुछ यूज नहीं होता है. इट्स लाइक कि मैंने वो स्किल सेट डेवलप किया ओवर द पास्ट 5 years कि मैं कुछ भी नई चीज पढ़ूंगा तो वो मेरे को समझ में आ जाएगी. Exactly. दिस इज द स्किल सेट विच आई हैव डेवलप्ड इन द लास्ट 5 years. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सीए किया तो वेस्ट हो गया, बट आई एम सेइंग कि ये मेरे को ट्रेड सिखाया सीए के करिकुलम ने, दैट वॉट एवर आई एम रीडिंग, आई हैव दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंडसेट कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करते जाओ चीजों को, एंड देन डोंट बिलीव like just because any person is randomly saying. Keep constantly questioning whatever the other person is trying to say, doubt their assumptions, and then only you'll get surety कि हाँ ठीक है, सामने वाला बंदा सही बोल रहा है. So this is like one advice which I'd like to give कि practical exposure is very important. And आजकल मतलब edtech traditional schools वगैरह ऐसे हो गए कि edtech is going to be replacing in the future, ऐसे बहुत लोग भी बोलते हैं. So मेरा तो यही मानना है कि it's like skill set बहुत matter करते हैं. So even if you have the relevant qualification, but what you develop is the skill set using that qualification, and that is ultimately going to play out. I know a lot of people having multiple qualifications like CA, CS, CMA with all India ranks in all the attempts, but still they aren't doing very well in their life. But I know a lot of people who have like dropped out from, let's say, a good university, but still they are doing well in their life. So the only difference between these two people is the curiosity, first of all, and second is the skill sets which they have developed over the past few years, and what how they utilize these skill sets. तो यार हमेशा मेरे को तो यार कभी कभी सच बताओ ना ईशान, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सब लोग सीईओ क्यों नहीं बन सकते. बल सीईओ मतलब कंपनी का एक ही रहेगा, राइट? तो बाकी सब उसके अंडर रहेंगे, सीएफओ हो गए, सीएमओ हो गए, फिर उसके अंडर एम्प्लॉयज रहेंगे. तो लाइक जस्ट ट्राई टू क्वेश्चन दिस टू योरसेल्फ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सब लीडर क्यों नहीं बन सकते. हायरार्की तो रहता ही है, Yeah. बिकॉज एवरीवन हैज दैट डिफरेंट लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड. आज मैं आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, इफ यू वांट टू हायर 5 people, तुम पांचों को क्या कर, तू पांच सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे, और हर एक का आंसर अलग अलग आएगा. कोई एकदम डिटेल में जाएगा, कोई एकदम ऐसे नॉर्मली ऊपर ऊपर से रिसर्च करके देगा, एंड लाइक इट्स वेरी एविडेंट कि पांचों का अलग अलग आएगा.
and that's where you come to know कि कौन कितना curious है, कौन कितना डिटेल में deep dive करता है. So I think that's very important to be curious, be inquisitive. कोई भी problem statement आ गया ना, उसको root cause तक analyze करो and then only go with the solution. So that That's is very important. that's really very informative in fact. So अभी जो हम बात कर रहे हैं, we have talked a lot about professional courses. So my question is कि if you want to get into IB, equity research, the top-notch finance profiles, so how important is your masters? Like, does it play a very vital role? कि अगर मैंने CFA कर रखा है, अगर मैंने FRM कर रखा है, फिर मैंने CA कर रखा है, so do I still need to go for masters to get into good jobs? Right. Again, that's a good question. So I think कि masters में मतलब अभी ऐसा हो गया है कि what I usually say to everyone is ना कि if you want to go for masters, then go for networking. Like your network is going to develop a lot, your personality will develop. And if you want that international exposure, अगर masters आप US, UK plan करते हो, then it's good to have an international exposure at least once in your life. You get Hmm. to understand कि लोग बाकी countries में कैसे behave करते हैं, उनका mindset कैसा होता है, आप अलग अलग countries के लोगों को मिलते हो, then that country like that constantly broadens your horizon according to me. तो मेरे हिसाब से ऐसा मानना है कि like coming to your question now of getting a job in investment banks and all. See, even basis your CFA and FRM, you can very well get a good job in an investment bank like JP Morgan, Goldman Sachs, or Morgan Stanley, Bank of America, etc. You see the profiles of analysts and associates in these investment banks, most of them are CFAs. And it's like कि अगर you want a good role in these investment banks, then MBA definitely adds a lot of value, because it's like MBA के बाद ना, these banks think that your communication skills increases a lot. And it's like कि client facing roles अगर देने हैं ये banks को तुम्हें, तो MBA is a must. तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, he was a CA and similar profile में एक IIM अहमदाबाद का बंदा हायर हुआ था. So IIM अहमदाबाद का जो बंदा था, he was given higher package no doubt, and he was given a client facing role. एंड जो सीए था, जो मेरा फ्रेंड था, ही वाज गिवन अ बैक एंड रोल जहाँ पे क्लाइंट फेसिंग नहीं रहेगा, यू वोंट गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट. पूरा बैक एंड पे काम करो डेटा, और वो जो IIM अहमदाबाद वाला बंदा है वो प्रेजेंट करेगा आगे Hmm. क्लाइंट्स को. तो इट्स लाइक कि दिस इज द हार्श ट्रूथ कि MBAs आर प्रेफर्ड, बट इट्स लाइक ऐसा, दिस इज नॉट द एंड गेम टू बी ऑनेस्ट. तो इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ ना, then very well with a CFA degree also you can get a job easily in an investment bank. तो इसका आंसर मतलब एक शॉर्ट यस या नो नहीं रहेगा, बट इसका आंसर ऐसा है कि मास्टर्स विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू. आपको करियर ट्रेजेक्टरी थोड़ा बढ़ जाएगा, बेटर हो जाएगा, यू विल गेट बेटर रोल विद अ बेटर पे. बट हैविंग सेड दिस, इट्स नॉट लाइक कि मास्टर्स नहीं किया तो जॉब मिलेगा ही नहीं. तो इवन विद CA, CFA, FRM, दिस इज लाइक अ वेरी गुड कॉम्बो. इवन लाइक नॉट CA, CFA, FRM इज ऑल्सो गुड कॉम्बो. इसके बेसिस पे भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इक्विटी एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, ऐसे काइंड के रोल्स इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक. More or less it depends from individual to individual, like राइट. there's no yes or no, but अगर आपने किया है तो it will add value, and that too डेफिनेटली. I think from a very good college. Usually या. it's very important that you do it from a tier 1 college. So या. I think this was pretty much it. All the important questions are covered. So before we end this, I just want to tell you to say a few words for the youth, any wise thing that you would want to share, some lessons that you have learned over a period of time, whatever you want, just the end part of this interview, whatever you wish to Right. share. Right. So I think one lesson which I have learned by staying in the corporate world is that it's very, very important to be expressive and share your thoughts and ideas, no matter Okay. how silly or stupid you may sound. So, like if you're a person who has some idea or who has some thought कि यार ये share करना चाहिए, but a lot of people like us, we are shy or we are skeptical while speaking कि यार इससे अगर मैंने ये बोला तो क्या अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे को वापस They're सुनाया afraid of the जाएगा ऐसे. judgment mostly. Yeah, Mhm. exactly. So what I feel is कि यार it's absolutely okay even if it's silly or stupid, just express yourself, and if there's any idea or if there's any thought, just try to contribute in the team meetings as well. So मतलब I'm not saying कि यार सिर्फ बोलने के लिए बोलना है, but you should Mhm. have that value addition point, and you should have that point which should be value additive. So giving you a very simple example, I don't know if you know this or not. There's a story of Colgate company in the year 1950, 1960. So that time it was not doing well at all. एकदम छोटा सा employee who was working in operations role, like ground level employee, he gave an idea to the team that वो जो Colgate का diameter होता है ना, थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा डायमीटर बढ़ गया, तो उससे टूथपेस्ट ज्यादा आएगा एंड उससे तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम क्विकली होगा. तो उससे रिपीट सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज डायमीटर बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. जो फोर्स रहता है हम जो लगाते हैं वो तो सेम ही लगाते हैं. तो इरिस्पेक्टिव कि अपन पेस्ट नहीं देखेंगे तो फोर्स उतना ही लगा लेंगे, तो उससे टूथपेस्ट ज्यादा निकलेगा. सो इससे उनका रिपीट सेल्स इतना बढ़ गया, तो उनका टर्नओवर 40% से इंक्रीज हुआ वो ईयर में. एंड दैट टाइम दिस एम्प्लॉय वाज रिवॉर्डेड विद द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड. And it's like he was an operation level employee. So समझ लो, like if he wouldn't have had shared this thought, like company turnaround नहीं हो पाती थी. So it's like as small ideas as this contributes a lot in any organization.
So I think to all the youth, just be open, be expressive, don't be shy. If you're in college, if you're in academics, ask questions to the teacher. ऐसे घबराना नहीं चाहिए कि यार क्लास में बच्चे क्या सोचेंगे, मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो, मैंने कुछ सिली पूछ लिया तो. इट्स लाइक एकदम फेमस सेइंग है ना, the person who does not ask a question, he remains a fool forever. He who asks a question remains a fool for 5 minutes. So Yeah, if you want to remain a fool for 5 minutes, it's okay यार, पूछ लो. एक साल बाद किसको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था कोई क्लास में, अगर वो सिली भी निकला तो. So just exactly. be open, be expressive, share your thoughts, share your ideas, and you never know when these dots will be connected, and like you will just have a very good growth trajectory. I think it was one of the most important parts of this whole video. We can talk Yeah. about all the courses, jobs, interviews all the time, but this is something that will stay with people for the rest of their lives, and not just in Right. their professional life, but even in their personal life. If you have something with someone, you should always, communicate. You should always tell, even if there is something that's may not be important to the other person, but you feel you should share it. Then I think that's a very, very wise thing that you have shared with everyone. So with Right. this, Kushal, I have covered all the questions, and thank you for answering all of them, each of them so beautifully. I think this was a knowledge packed session, and I was absolutely thrilled to have you here. Thanks, man. Thanks a lot. I mean, like you asked wonderful set of questions, and thank you so much for having me. Like I enjoyed a lot personally, and keep guiding everyone. I watch all your videos, even on YouTube, even on Instagram. So keep guiding everyone and keep inspiring everyone. Since you have that credentials and you have that like credibility, so it'll be easier for you to guide everyone. So just keep doing that. And if you need any kind of help, of course, like we are there in the same Definitely. field, so would be good to connect. Likewise, Kushal. Thank you so much Yeah, for man. joining, and guys, thank you so much for watching this.